इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। संयुक्त राज्य अमेरिकायां ट्रम्प प्रशासनेन प्रख्यापितैः आयातशुल्कनियमैः सम्पूर्णैः विश्वे वैश्विकापणसंस्थानानि वैचित्र्येण विक्रयणं प्रति अग्रसराणि अभवन्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः पोर्तगाल स्लोवाकिया देशयोः स्वयात्रायाः प्रथमे चरणे अद्य प्रातः लिस्बन नगरं सम्प्राप्य पोर्तगालदेशीयेन स्वसमकक्षेण मार्सेलो रेबेलो डी सूसा इत्येतेन सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयां वार्तां विहितवती। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अवदत् यत् सीमा सुरक्षाम् अधिकं सुदृढं कर्तुं सर्वकारः विद्युन्मान निरीक्षण व्यवस्थां प्रवर्तयति। अपि च IPL इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां मुम्बई इंडियन्स दलं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू दलं सम्मुखीकरिष्यति। इयं स्पर्धा सायं 7:30 मुम्बय्याः वानखेड़े क्रीडाङ्गणे भविष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। संयुक्त राज्य अमेरिकायां ट्रम्प प्रशासनेन प्रख्यापितैः आयात शुल्कनियमैः सम्पूर्ण विश्वे वैश्विकापणसंस्थानानि वैचित्र्येण विक्रयणं प्रति अग्रसराणि अभवन्। नैस्डैक 100, S&P 500, निक्केई 225 चेत्यादिषु प्रमुखसूचकाङ्केषु महती अपचितिः द्रष्टुम् आगता। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः पोर्तगाल स्लोवाकिया देशयोः स्वयात्रायाः प्रथमे चरणे अद्य प्रातः लिस्बन नगरं सम्प्राप्य पोर्तगालदेशीयेन स्वसमकक्षेण मार्सेलो रेबेलो डी सूसा इत्येतेन सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयां वार्तां कृतवती। उपवेशनानन्तरं संयुक्तवार्ताहराणां सम्मेलने सा अवोचत् यत् भारत पोर्तगालयोः मध्ये ऐतिहासिकाः सम्बन्धाः सन्ति ये अधुना आधुनिकरूपेण बहुपक्षीयरूपेण विकसिताः क्रियन्ते। भारत पुर्तगाल संबंध ऐतिहासिक है। ये संबंध लगातार मजबूत होते रहे हैं और अब ये एक आधुनिक बहुआयामी और गतिशील पार्टनरशिप के रूप में विकसित हो रही है। लगातार उच्च स्तरीय यात्राओं से इन संबंधों को मजबूती मिली है और बढ़ती वाणिज्यिक सहभागिता से ही इन्हें सहयोग मिला है। हमारे रिश्ता आपसी विश्वास, समझ और मुख्य हितों के मुद्दों पर एक दूसरे के समर्थन पर आधारित है। अत्रावधौ राष्ट्रपतिना प्रोक्तं यत् तया स्वकीयेन पोर्तगाल समकक्षेण सह द्विपक्षीय सम्बन्धानां विविधेषु क्षेत्रेषु व्यापकी रचनात्मिकी च चर्चा समनुष्ठिता अस्ति। आज सुबह राष्ट्रपति रेबेलो डी सूसा के साथ मेरे रचनात्मक और सार्थक बैठक हुई, जिसमें हमारे द्विपक्षीय संबंधों के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं और साझा हितों के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की है। हमने विशेष रूप से व्यापार और निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, IT और डिजिटल प्रौद्योगिकी, रिन्यूएबल एनर्जी, कनेक्टिविटी और मोबिलिटी में अपने दीर्घकालीन द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने और लोगों के पारस्परिक संपर्कों को और बढ़ावा देने का संकल्प लिया। हमें यूनाइटेड नेशंस और अन्य बहुपक्षीय मंचों में अपने समन्वय और सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुई। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अवदत् यत् सीमा सुरक्षाम् अधिकं सुदृढं कर्तुं सर्वकारः विद्युन्मान निरीक्षण व्यवस्थां प्रवर्तयति। गृहमन्त्री जम्मूकश्मीरस्य कठुआ नगरे सीमा सुरक्षाबलस्य सैनिकान् सम्बोधयन् आसीत्। सः अवदत् यत् भूमिगत सीमापारस्य सुरंगानाम् अन्वेषणार्थं प्रौद्योगिक्याः उपयोगो भविष्यति इति। गृहमन्त्री कठुआ जनपदस्य उपरक्षणस्थानम् अपि अवलोकितवान्। पश्चाद्दिने श्री शाहः तथा च जम्मूकश्मीरस्य उपराज्यपालः मनोज सिन्हा च राजभवने आतंकप्रहारेषु वीरगतिं प्राप्तवतां 11 संख्यकानां सैनिकानां परिवारान् मिलितवन्तौ।
प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज़ ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। स्वास्थ्य व्यवहारस्य च विषये जागरूकतां वर्धयितुम् अद्य सम्पूर्णे विश्वे विश्व स्वास्थ्य दिवसः आमान्यते। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन अस्मिन् वर्षे स्वस्थारम्भः आशान्वितं भविष्यम् इत्येषः शीर्षकः उद्घोषितः अस्ति, येन मातॄणां नवजात शिशूनां च मृत्युनिवारणं भवेदिति। सहैव महिलानां दीर्घकालिक स्वास्थ्याय कल्याणाय च प्राथमिकतां दातुं शक्येत। अस्मिन्नवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एकस्य स्वस्थ विश्वस्य निर्माणाय स्वकीयां प्रतिबद्धतां पुष्टीकृतवान्। स्वकीये सन्देशे असौ प्रोक्तवान् यत् सर्वकारः स्वास्थ्यसेवाभ्यः निरन्तरं ध्यानं केन्द्रितं करिष्यति, जनकल्याणस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु च निवेशं करिष्यति। श्रीमोदिना अस्मिन् विषये बलं प्रदत्तमस्ति यत् उत्तम स्वास्थ्यं सम्पन्न समाजस्य आधारशिला वर्तते। मैं आज आपसे वादा चाहता हूं, हम सभी को अपने खाने के तेल में 10% की कटौती करनी चाहिए। मोटापा कम करने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। इसके अलावा हमें एक्सरसाइज को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। अपने को फिट रखते हैं तो ये विकसित भारत की यात्रा में आपका एक बड़ा योगदान होगा। अत्रावसरे स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्यमन्त्रिणा अनुप्रिया पटेल इत्यनया आकाशवाण्या सह जाते विशिष्टे साक्षात्कारे स्वास्थ्यक्षेत्रे देशस्य प्रशंसनीयोपलब्धयः प्रकाशिताः, यासु मातॄणां शिशूनां च मृत्युप्रतिशततायाम् उल्लेखनीया अपचितिः सम्मिलितास्ति। तया सर्वेऽपि नागरिकाः स्वस्थजीवनशैल्याः अनुपालनाय सम्प्रार्थिताः। Our health is our real wealth, and health is not just our physical health, it is our mental and emotional health as well. Take care of your physical health, eat what is local, what is seasonal, what is fresh, eat less processed food, exercise, physical activity is very important, indulge into meditation, yoga, whatever you like. While it's important to take care of the family, it's also important that women and girls take care of their own health. सर्वकारेण पेट्रोल डीजल इत्यनयोः इन्धनयोः उत्पादशुल्के प्रतिलीटर मितं प्रति 2 रूप्यकयोः वृद्धिः कृतास्ति। यद्यपि तैलविपणन संस्थानैः स्पष्टीकृतं यत् 2 पेट्रोलियम उत्पादयोः विक्रयण शुल्केषु कीदृशी अपि वृद्धिः न करिष्यते। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् संसूचयता पेट्रोलियम प्राकृतिकवातीन्धन मन्त्रिणा हरदीप सिंह पुरी इत्येतेन प्रोक्तं यत् उत्पादशुल्के कारितया वृद्ध्या उपभोक्तृषु कीदृशः अपि प्रभावः न भविष्यति। वित्तमन्त्रालयेन प्रख्यापितया अधिसूचनया अनुसारं पेट्रोल डीजल इत्यनयोः उत्पादशुल्के 2 रूप्यकयोः वृद्धिः कृतास्ति, या श्व आरभ्य प्रभावम् आनयिष्यति। प्रवर्तन निदेशालयस्य अधिकारिणः तमिलनाडुराज्ये राज्यनगरपालिका प्रशासनस्य नगरीय जलापूर्ति मन्त्रिणः KN नेहरू इत्येतस्य, तस्य च भ्रातुः रविचन्द्रन इत्येतस्य, ट्रू वैल्यू होम्स इत्येतस्य व्यावसायिक सहभागिनः मणिवन्नन इत्येतस्य, पेरम्बलूर मण्डलस्य सांसदस्य पुत्रस्य अरुण नेहरू इत्येतस्य च निवासस्थानेषु सहसान्वेषण कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। 2 बैंकयोः ऋणयोः संलग्नतायाः प्रवञ्चनारोपैः सह एतानि अन्वेषणकार्याणि सम्बन्धानि इति कथ्यते। तिरुचिरापल्ल्यां 2 बैंक अधिकारिणाभ्यां तेषां विषये व्यवहारविषये च परिपृच्छा जाता। चेन्नई कोयम्बटूर नगरयोः अपि अनेकेषु स्थानेषु नेहरू इत्येतस्य भ्रातुः मणिवन्नन इत्येतस्य स्वामित्वस्य रियल एस्टेट संस्थासु अपि अन्वेषणकार्याणि प्रचलन्ति। नौसेनाध्यक्षाणां 25,200तमवर्षस्य इत्येतस्य सम्मेलनस्य प्रथमसंस्करणस्य 2. चरणम् अद्य नवदिल्ल्यां समारभत।
इदं सम्मेलनं सर्वोच्चस्तरीयम् अर्धवार्षिकम् आयोजनमस्ति यद्धि शीर्ष नौसेनायाः सेनापतीनां मध्ये महत्वपूर्ण सामरिक परिचालन प्रशासनिक विषयेषु चर्चां सुकरयति। आईपीएल इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां मुम्बई इंडियन्स दलं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू दलं सम्मुखीकरिष्यति। इयं स्पर्धा 7:30 भविष्यति। इति वार्ताः।